अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम ENG101 के GDB नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे और मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा और करवाऊंगा। और इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसकी फ़ाइल चाहिए हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे मांग सकते हैं। उसका नाम और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, लेकिन उस फाइल का एक पासवर्ड होगा जो कि मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा, जिसके बगैर वो जो फाइल है वो ओपन नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं, मतलब वेबसाइट किस तरह बनाई जाती है और आप बनाना सीखना चाहते हैं, तो मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया है HTML के नाम से। इसमें मैं फुल डिटेल में सारा कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताऊँगा और बनाना सिखाऊँगा। और इस कोर्स का आपको फ़ायदा क्या होगा? आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको एक अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब मिल जाएगी विदाउट एनी डिग्री। आपके पास डिग्री है या नहीं मैटर नहीं करता, आपको एक अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब मिल जाएगी। तो वो कैसे मिलेगी, अगर आप चाहते हैं मैं वो भी बताऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये इसके पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। ये पहला पार्ट आपके सामने है। फॉर मी एजुकेशन इज जर्नल, इट इज़ अ वाइड रेंज ऑफ नॉलेज। यस, इट इज़ नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक, बिकॉज हाउ वी कैन नो द फैक्ट इफ़ वी डिड नॉट थिंक। वी need to enhance our mind and discover new knowledge, because education is continuously process. Education is the way you think and to train their mind to think logically. They were not in a college or they does not need to go school to know the fact, because they can get them from book or in a textbook. Education के बारे में basically making a discussion does not tell you to follow what others saying, but instead walking up your mind to think of ways by seeing the different angles in life. That's what education wanted to learn, to adopt, and also to realize what the fact between those sides in your encountered as a student and as a human being. I believe that the purpose of education is to be able to succeed in whatever it is you want to do in life. Everyone have a unique style to learn. You must need to open your mind to some other ways of thinking. Use your knowledge to solve the real world problems. Use your mind to realize the real situation of the world. इसका part 2 है guys. In my opinion, both human upbringing and financial security are most important. Human upbringing, early childhood education, is the term that refers the period of time from childbirth. It is an important time in children's lives because it is when they first learn how to interact with others, including peers, teachers, and parents, and also begin to develop interest that will stay with them throughout their lives. Financial security education is a key part of a society growth and the process. When people are educated, they can significantly contribute to their families and societies in various aspects and fields, thus creating a stable and a stimulating community. Security, a higher income, people with higher education and varied experience are more likely to paying expert job. Study hard, dedicate your time and effort to acquire knowledge and reach a high level of competence. If you would like to lead a comfortable lifestyle, developing problem solving skill, one of the benefit of education is that the education system teaches us how to obtain and develop critical and logical thinking to make independent decision. सो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी हवाले से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो लिंक इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन पे है, नाम भी मेरे से डायरेक्ट वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो यू ऑल हैव अ गुड डे। थैंक यू।